अंजलि बहुत मौसम्बी पड़ी हुई है, जूस निकालने के लिए बोल दूं? नहीं, आई हैव अ डिफरेंट प्लान, रहने दो अभी। लेकिन बहुत सारी मौसम्बी और सूख रही है। आई नो, पर मैंने कुछ सोच रखा था, मैं देख लूंगी। प्लीज, आई हैव सम थॉट्स ऑन इट, मैं करती हूँ। एक्चुअली इतना सारा काम है ना, फिर कब निकालोगी काम? माना तुम्हारा इतना बिगड़े। गुरंग प्लीज, जब मैंने एक बार बोला ना मैं देख लूंगी, अलाउ मी टू डू थिंग्स समटाइम्स माय वे, प्लीज। ओके। Let's move on. Gorang has a query and a concern. Rather than taking the decision himself, he wants to check with Anjali first. I can see that Anjali is overworked right now. I want to help her. Why can't he ever accept my answer? Why does he always have to insist? Why is she so adamant? I want to make things easier for her. When he is so overbearing, it makes me feel that I am incapable of taking simple decisions. These are real life scenarios. And you are not the only one. It happens for everyone. The trick is to understand how to avoid it or repair it. That's it. Are you wondering what to do when the damage is done? Check out part 2 to see how to repair the situation.